In the previous videos, we have completed digestive system of the frog, respiratory system, circulatory system. Now in this video, we are going to study the another important system, that is urinogenital system. Then what is urinogenital system? तो urinogenital system क्या है? तो urinogenital system is a combination of two system. कौन से? First one is it's a combination of excretory system and reproductive system. Excretory system and reproductive system combine together and they produce the one system and उसे हम कहते हैं urinogenital system. But remember, ये जो urinogenital system है, that urinogenital system is present only in male frog. किसमें होती है? Only in male frog. It is not found in female frog. In female frog, excretory and reproductive systems are separate. फर्स्ट वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम का रोल क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का रोल है टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट. क्या है? टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. इन फ्रॉग का अगर हम थिंक करेंगे फ्रॉग के बारे में, तो फ्रॉग में कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है? इन फ्रॉग द यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट. Hence, the frog is called as यूरियोटेलिक organism. कौन सा ऑर्गेनिज्म कहते हैं? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन से चीजों से बनी हुई है? कौन से स्ट्रक्चर है? इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ किडनीज. फर्स्ट. सेकेंड, इट कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ ureters, pair of ureters, then cloaca, and then last is urinary bladder. Last is urinary bladder. Right? Pair of kidneys, pair of ureters, cloaca, and urinary bladder. Reproductive system में there is a pair of testes. And remaining structures are common, which is of excretory system. So किडनी कैसा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंसीडर करेंगे तो किडनी कैसा है? पेयर में है, रेड कलर्ड. कैसा है? रेड कलर्ड, एज यूजुअल बीन शेप. एंड कहां है? विच इज प्रेजेंट पोस्टेरियरली, पोस्टेरियर टू द बॉडी पार्ट, posterior to body parts or posterior to body cavity, posterior side. right? किडनी में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो काम करता है, दैट इज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सो व्हाट इज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? और इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेफ्रॉन. जैसे कि हमारे इसमें है कि उसको हमने क्या कहा है? दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. कौन सा? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. दूसरा नाम है नेफ्रॉन. राइट? And pair of ureters, tube-like structure, cloaca, common opening, and urinary bladder, a sac-like structure, thin membranous sac-like structure. Now we'll draw the diagram which explain the urinogenital system. So कैसे दिखती है? So first, kidney. As usual, कैसे? तो स्लाइडली बीन शेप. कितने हैं? तो पेयर ऑफ किडनीज. राइट? इसको मैं लेबल करता हूं.
किडनी, एंड इसके ऊपर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, such tube like structures on both, एंड उसको कहते हैं फैट बॉडीज, फैट बॉडीज। एंड हम लोगों को पता है कि किडनी के ऊपर देयर इज वन ग्लैंड, उसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, राइट। दिस इज किडनी। किडनी के ऊपर समझो, इफ इट इज अ किडनी, देन किडनी के ऊपर ऑन वन साइड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस। यहां पर मैं निकालूंगा कैसे है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओवल टेस्टिस ऑन बोथ साइड ऑफ द किडनीज। एक्चुअली इट इज लोकेटेड ऑन द किडनी, किडनी पे रखे हुए हैं, राइट। पर सेपरेट दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है। दिस इज टेस्टिस, राइट, ओवल शेप। अब ये जो टेस्टिस है, दिस टेस्टिस का काम है टू प्रोड्यूस द स्पर्म, एंड टेस्टिस से देयर आर सम ट्यूब निकलती है, लाइक दीज ट्यूब्स, ब्लैक पेन से लिखा रहा हूं। सच ट्यूब्स आर अराइज फ्रॉम द टेस्टिस एंड विच एंटर इट इनटू द, कहां एंटर होती है, विच एंटर इट इनटू द किडनी, किडनी में एंटर होती है, लाइक दिस ट्यूब, एंड उसे कहते हैं वैसा एफ्रेंशिया। क्या कहते हैं, वैसा एफ्रेंशिया। नियर अबाउट 10 टू 12 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसा एफ्रेंशिया, राइट, जो किडनी में ओपन होती है। अब किडनी में ओपन होने के बाद वो इट कहां से कैसे ओपन होती है, इट ओपन्स इट इनटू अ वन ट्यूब, एक ट्यूब से ओपन होती है, ऑल दैट ओपन इनटू अ वन ट्यूब, एंड उसे कहते हैं बीडर्स कैनाल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीडर्स कैनाल क्या करती हैं, रिसीव स्पर्म, स्पर्म क्या है, मेल गैमेट, कहां प्रोड्यूस होते हैं, इट प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, किडनी में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, थ्रू वैस एफ्रेंशिया इट एंटर इट इनटू द बीडर्स कैनाल, बीडर्स कैनाल में एंटर होते हैं। ऑन अदर साइड्स, किडनी के दूसरे बाजू में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वन मोर कैनाल, एंड ये जो कैनाल है, ये कैनाल क्या करता है, तो इट कलेक्ट excretory waste, it collect excretory waste, right, and they join here. So in this tube क्या आ रहा है, this tube में sperm आ रहे हैं, and in this tube, ये ट्यूब में क्या आ रहा है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, दो कंबाइन होते हैं, एंड दिस ट्यूब्स आर, ये दोनों के दोनों ट्यूब्स एक दूसरे के साथ ट्रांसवर्सली अटैच है, कैसे अटैच है, इट अटैच ट्रांसवर्सली, राइट। देन फाइनली दीज ट्यूब्स बाहर निकलते हैं एज अ यूरेटस, यूरेटस। So ureters in male form is known as urinogenital duct. उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, बिकॉज इट कैरीज और इट्स अ कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज, ये दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर first sperm and second nitrogenous waste, therefore it is urinogenital duct। स्पर्म को भी लेके आता है एंड बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको भी लेके आते हैं, दैट इज कॉमन पैसेज, सो इट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब ये जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, दैट यूरिनोजेनाइटल डक्ट ओपन इट इनटू द, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में निकाला था,
that is rectum, ओपन होता है, राइट, दिस इज रेक्टम, रेक्टम में ओपन होता है, एंड देन ये जो है दैट इज क्लोएका, दैट इज द एक्सटीरियर ओपनिंग। बट एक इधर साइड से भी आएगा, बट यहाँ पे वेंट्रल टू द रेक्टम, ये रेक्टम के वेंट्रल को देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सच थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एंड उसे कहते हैं there is a thin membranous structure, and that is urinary bladder, right? And then urinary bladder opens it into the rectum and finally through the cloaca. So cloaca को मैंने पहले ही कहा कि what is cloaca? Cloaca is a common opening for three systems. First one is reproductive, second excretory, and third one is digestive. Right. So this is urinogenital system in frog. So here we have completed the another important system, that is urinogenital system, which is present in frog only. In the next video, we'll discuss the reproductive system in female.